Hey guys, welcome. Good evening to each and every one of you, and welcome to the session today. All right, it's so lovely to see so many of you students, right, in the session, and welcome each and every one of you, right. Very good evening to all. I was actually following your chats, and I think there were flurry of chats in the stream itself and announcing where each and every one of you is from, right. It's so lovely for a teacher, right, to be sitting here in Bangalore and seeing that students from all over the country, right, are there actually and attending the session, right. So my dear students, from wherever you are, very warm welcome to the session. For those of you who are new to the session and who are coming to Vedantu's session for the first time, a special welcome. My name is Vamsi Krishna, and I'll be your teacher for the session today. Okay, and I'll be starting with some of the introductions soon, right? But before that, welcome to every one of you. All right. Okay. Awesome. So guys, I will be following your chats. I have the chats opened on my screen just on my left as well, and I can see there are flurry of chats. So just don't mind if I'm not able to respond to each and every one of them, but towards the middle and towards the end I'll be taking up some few very important questions which will be asked by you in the chat, right, and I'll be addressing that if relevant right there itself. If not, I'll be taking few of that towards the end of the session. Why I would not be responding to all the chats inside the session is because many of the things you are asking will be covered in the session itself, right? So be patient, right? And this session is really I'm doing so that it benefits you, especially the kids who are going to appear for their exams very near, right? And I hope you derive some value out of it. Okay? चलो शुरू करते हैं फिर. I know your time is very precious, तो without wasting much time शुरू करते हैं, right? ठीक है. अमेजिंग. तो व्हाट इज टुडेज सेशन ऑन? क्या करने वाले हैं आज हम? ओके, सो आज का सेशन, लेट मी ब्रिंग अप माय स्क्रीन एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन नाउ. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं इन द स्क्रीन टुडेज सेशन इज अराउंड सम 7 बिग सीक्रेट्स टू क्रैक JEE. Okay, in 30 days is because probably that's the time which is left for you guys to appear for your JEE mains पहली बार जो होने वाला है. But actually 30 days is not what is more important. What is more important is the things which I am going to share with you today, right? So guys, today it's not much of teaching. पढ़ाई बहुत नहीं, but ये जो चीजें मैं बताऊंगा, these are very important to score higher or probably get a better chance of getting selected. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई के बीच में हम लोग कई बार ये सिंपल चीजें भूल जाते हैं, राइट? वी फॉरगेट सिंपल थिंग्स लाइक दिस, एंड दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाई आई से दिस? बिकॉज आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज स्टडीइंग डिड सम ऑफ दिस मिस्टेक्स, जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस और रैंक बुरी हुई. एंड ऑल्सो उसके बाद आई हैव सीन काउंटलेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है. आई हैव ऑल्सो सीन देम, if done these things, taken these things seriously, they have seen a tremendous increase in their performance. ठीक है, तो I'll be sharing some of it with you guys today. और शुरू करते हैं. So for some of you who are new, as I said, a quick introduction of myself. As I told you, my name is Vamsi. I'm the co-founder of this wonderful platform Vedantu, right? Sorry. और I did my BTech from IIT Bombay टाइम बैक, एंड जिस तरह से आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स. एंड बहुत टफ टाइम होता है ये, राइट? बहुत टफ टाइम होता है. आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट. तो आज माय फ्रेंड्स, राइट, आज गाइस थोड़ी बहुत चीजें आई विल शेयर विथ यू जो कि ये जर्नी आसान कर देगी, राइट? दिस विल मेक योर जर्नी लिटिल बिट easier. Okay. I had the fortune enough of teaching lots of students, right? As you can see, I have taught thousands and thousands of students, and some of them very bright. I have been fortunate enough to be
interacting with some of the very brilliant minds जिनका single digit ranks भी आए हैं, right? But बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिनकी रैंक्स नहीं भी आई हैं, right? और मैं काफी बार बच्चों को बोलता हूँ, I tell this to my students a lot, that the learnings and the tricks and the tips which I have discovered is from teaching these kids more, right? जिनकी पोटेंशियल होने के बावजूद भी रैंक्स नहीं आई हैं, बिकॉज सर्टेन चीजें इन लोगों ने गलत करी हैं, इन लोगों ने ठीक नहीं करी हैं. और अगर आपको वो चीजें पता चल जाएं, इफ यू गेट टू नो दोस थिंग्स विच दीज गाइज डिडंट डू इट राइट, प्रॉब्ली यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड improve and more importantly not do those mistakes, right? So today's session is essentially going to be all about those things. ठीक है? I can see lots and lots of chats, guys. ठीक है? And so we will begin now. So without wasting much time, let's jump right in. Okay? So everyone excited? All right. Cool. I can see flurry of messages. That's lovely. I think close to 1200 students are currently attending this live. All right. So welcome each and every one of you. ठीक है? तो चलते हैं यार. I want probably this should span around 30 odd minutes, right? If I time this right. चलो start करते हैं. Before I start, a very very big point I would want to put here, and that is not of any big topper like obviously at Vedantu we also know Sarvesh, and there is a YouTube interview of Sarvesh with me and Anand sir also, and you can check that out. Very wonderful done interview that was. But I wanted to highlight the story of Arjun. Why Arjun and why not anyone else, probably even a Sarvesh, is because आप लोगों के लिए, which right now you are listening to, Arjun is the most relevant experience. Why? Because Arjun was a student who came to us just around last year. Exactly, in fact, I think it was in November and December only, right? Last year. And he was like, not preparing much. He was like, कि हाँ, पता नहीं कर देंगे, हो जाएगा, right? He was in that state. And from that time, he prepared. And if he could go on and score a rank of 338, right? Which is by no means, a simple rank, right? It's very 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 tough to get that rank. और अगर अर्जुन उस point से, right, around December last year, if you could go on and get this rank, why can't you, right? And that is why we make it a point at least to highlight. This is a recent story also, right? So we make it a point to tell you a story of Arjun to simply help you believe in yourself कि अगर this child can do it, so can you. ठीक है? चलो. So from that note, let's jump in and let me tell you, आज जो चीज है मैं बताऊंगा. Today the things which I will be sharing with you, if you have the discipline and if you have the focus of implementing that, right, nothing can stop you from actually getting a very good rank. All right, it's a guaranteed. Okay, trust me on this. We have taught thousands and thousands of students. और आज से भी अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे, you will do great. All right. So guys, on that note, let me begin and let me just directly jump to the secret number 1, which I would want every aspirant to implement. Okay, and that is belief, right? Because I started off with this, right? I started off with Arjun's story, and it is very important that the secret number 1 is actually quite simple. It is so simple that students simply don't get it only. ठीक है कि इतना सिंपल है कि they don't just get it, right? But believe me, this is the most powerful. The secret number 1, my dear students, is that you need to believe that you can crack it. आपको ये यकीन होना पड़ेगा कि आप भी वो रैंक ला सकते हो. Because it's so simple, right? You would think that, sir, what will happen with belief, right? मैं believe कर दूं क्या उससे रैंक आ जाएगी? ऐसे थोड़ी ना होता है. But my dear guys, actually ऐसे होता है. It actually happens like that. Okay? Belief is the most important and the beginning, the starting point, right? If you don't have this, nothing else. इसके बाद जितने भी मैं secrets है, whatever other guys also tell you, if you implement, nothing will happen, right? And belief is very important. Belief comes from the fact that many of you will think
Oh, JEE mains this time it's in Jan. Oh, this is the first time it's in Jan. I don't have time to study. How can I do it? Oh, my pre-boards will also be there at that time. There's so much stress. There is so much to do. मैं कैसे कर सकता हूँ? My syllabus is not over, right? My syllabus is still going on. I don't have time to revise my 11th, right? 11th कैसे करूँगा? 11th कब करूँगा? 10 topics तो I don't even know. देखो पता है ये सब चीजें, right? ये सब चीजें we tell ourselves, okay, and we get demotivated and we simply stop believing it. यही होता है. Simply stop believing. मेरे साथ हुआ है. It happened with me. Right? I can tell you this as a fact. It happened with me. It happens with a majority of the students I interact with, and I'm sure many of you would be experiencing this. Right? Dejection. वो कि it's not my cup of tea. हो रहा है? Does this happen to you? Tell me. Honestly, tell me on the chat. Right? कि does this happen to you? होता है ये? Right? Yes or no? I'm seeing your chats. Yes, and I can see like almost, if not, I can't count this, but at least 500 more than that, right? Happens. सब कोई लिखता है कि yes sir, me too, sometimes sir, होता है. So guys, पता है, normal है. सबसे पहला स्टेप ये है, ये normal है. This you need to understand कि this is normal. Then you start from there. ठीक है, ये normal है first. Second, अगर ये सबके साथ होता है, right? So cool है, right? Then why are you only thinking about it? अगर ये, जैसे आप खुद ये चैट देख लो, I think many of you can see the chats also, in fact all of you can. अब देख लो, अगर हर कोई yes लिख रहा है, इसका मतलब everyone is feeling this. Yes, if everyone is feeling this, then why are you thinking that you are the only one? आप क्यों अपने आप को बेचारा समझते हो? Right? क्योंकि everyone is doing it, है ना? तो यार guys, important, सबसे important, at least जो students ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए तो एटलीस्ट आई कैन से कि अब आप लोगों को ये सोचना है कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है, राइट? तो यू शुड स्टॉप वरिंग अबाउट दोस थिंग्स एंड स्टार्ट बिलीविंग कि बढ़िया है, सबके साथ हो रहा है तो मैं तो उसके बारे में नहीं सोचूंगा और मैं तो बस ये सोचूंगा कि मेरा तो रैंक हो रहा है, मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है तो किसी और का नहीं हो रहा है बस. और उस सेल्फ बिलीफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट? ऑलराइट, this is the most important. You as students will think that that's not just me in the world, right? Everyone is going through this, so I will have the self confidence and I'll just go get it. Okay, very important. Okay, let me put it, 80%, okay, of these things will actually get solved if you just come with the self belief. I'm spending so much time on this point because this is the most important point, right? If this isn't there, nothing else will work, my dear students. Okay, so do you promise that you will have that self confidence and belief? आप प्रॉमिस करते हो कि आप बिलीव करोगे कि आपकी रैंक अच्छी लगेगी, इनफैक्ट टॉप 10,000 में लगेगी, राइट? विच आई स्टार्टेड ऑफ विथ. यस और नो? प्रॉमिस टू मी, प्रॉमिस टू एवरीवन एल्स who is there currently with you watching the session, and promise most importantly to yourself. All right, नहीं yes लिखो मत, yes से नहीं चलेगा, promise लिखो I promise, right? yes देख रहा है, yes नहीं चाहिए, right? I promise. Okay, come on, write it down. All right, chalo, great. And if you promise, I can see those lot of promises, but if you promise, then I am promising you with my experience, right, that this itself will be the single biggest factor to get you into the top ranks. Okay, great, amazing, right? Let's move on from this. Okay, great guys, chalo आगे बढ़ते हैं. Now I'll come down to the more nuances of it. और देखो ये भी है कि there are a lot of things. Okay, obviously 7 secrets, although its time is less, so and I can't give you 100, so there has to be some number, right? But काफी इसमें से वो चीजें हैं which are very relevant for this time as in exam is just few months down the line, so many of the things will be relevant for this time. Okay, so on that note, let me go on to the second secret, right, which is this. Important. Look at the screen. इस टाइम पे होता क्या है, बहुत सारी चीजें, राइट, हमें लगता है हमें नहीं आती, राइट? वी थिंक there are a lot of things, in fact majority of the things हमें लगता है हमें आती नहीं, राइट? I'll take my example. When I was just before my exam in maths, I thought I don't know
Trigonometry, I was very less confident on conic sections, ellipse, hyperbola, वो सारी चीजें. Permutation, combination, probability कुछ समझ में ही नहीं आती थी, right? Just maths I'm talking. Matrix determinants also I did used to get, okay? And algebra में binomial, I mean lot, okay, lot. और ये सब चीजें तो वो है जो कि बनता ही नहीं था. And there are many other topics which I felt that they are average and I need to work on. But exam में भी सिर्फ 2 महीने 3 महीने हम क्या क्या करें, right? That's a very big issue, right? होता है ये, होता है yes or no? Yes? And many of you are writing inorganic chemistry and all that. Inorganic chemistry में हम आते हैं. I have some special secret there. But this is what happens, right? And see, JEE is an example, guys. For all of you who are watching this session, JEE is just an example. Whatever I am telling you is equally applicable for any competitive exam. Any competitive exam. NEET ले लो, आप CET ले लो, MSET ले लो, whatever you want to take. ठीक है? तो करना क्या है? What do we do? So guys, the important thing is the following. If you can do 100%, amazing, great. But unfortunately, very few, minority of the students can do 100%. ठीक है? 100% strong नहीं बना सकते topics, right? तो क्या करना चाहिए? Important secret ये है कि इस टाइम पे when there are just few weeks remaining, you should ignore your weak topics and you should just pick up your strong, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, और चलो एवरेज बोल लेते, सिर्फ उन टॉपिक्स को आप उठाओगे और उस पे मेहनत करोगे, राइट? नाउ लेट मी एलॉबरेट ऑन दिस. ठीक है, एलॉबरेट करते हैं. 2 चीजें. एक है, एम एग्जाम्पल आई विल टेक, लेट्स से देयर आर 10 चैप्टर्स, राइट? कहीं पे भी 10 है, 10 कुछ भी हो सकता है, 10 एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. अब 10 में मैं देखता हूं, आई सिट एंड रिव्यू कि 10 में मुझे आता कितना है, हाउ मच आई नो. And you need to do this, you need to take a copy and you should actually do this, right? You should write the chapter and create that. Is it strong? Is it average? Or is it weak? ये 3 आप बनाओगे sections. Important है, ये करना है आपको. This you have to do, right? After this session probably. So you will list all the topics. Index ले लेना NCERT book का या JEE का syllabus ले लीजिएगा. And then उसमें हर एक के across you write, is it strong, is it average, is it weak? You have to write across every topic. Okay, all right. Then, so what is strong? Sometimes students tell, right, sir, I don't know whether it is strong or average. ठीक है, that's a different problem statement altogether. तो उस केस में, right, आपको जो लगता है आप लिख लो, इतना फर्क नहीं पड़ता, right? Strong is normally that in which you typically feel that questions when it comes from this हो जाता है मेरा. आई हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट हो जाएगा, हो जाता है या हो जाएगा कॉन्फिडेंस है, राइट? एंड यू नो इट, राइट? व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक. तो राइट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दैट. एवरेज इज समथिंग विच यू फील दैट ये होता नहीं है, बट एटलीस्ट आई फील दैट आई नो दिस टॉपिक, राइट? और थोड़ी मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, राइट? दैट्स योर एवरेज, राइट? एंड वीक, माय डियर स्टूडेंट्स, इज लाइक फॉर मी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाज वीक. मीनिंग बाय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था उसमें, कुछ भी नहीं, राइट? और इनफैक्ट इतना कि मुझे लगता था कि पढ़ूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा शायद, राइट? सो दैट्स लाइक वीक फॉर यू. वीक इज समथिंग विच यू हैवंट टच. सो इन 12th वीक इज समथिंग विच यू डिडंट गेट, मतलब समझ में नहीं आता. एंड फॉर 11th टॉपिक्स, स्पेशली फॉर द किड्स फॉर 12th राइट नाउ, फॉर देम 11th टॉपिक्स में वो है वीक जिसको आपने पूरे लास्ट 1 साल में छुआ ही नहीं, और पिछले साल भी वो आपसे नहीं होता था, राइट? दोस आर वीक टॉपिक्स, राइट? सो राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन. ठीक है, आप लिख दो सारे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, और फॉर माय बायोलॉजी स्टूडेंट्स बायो का आप लिख लो, राइट? देन व्हाट यू डू, देन यू विल पिक अप स्ट्रॉन्ग एंड एवरेज टॉपिक्स, राइट? एंड इंश्योर कि ये तो आप फुली प्रैक्टिस कर रहे हो इन द लास्ट रिमेनिंग वीक्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये तो छोड़ना ही नहीं. Why am I saying this is because it's a big secret, because many of the students commit this mistake. ये गलती करते हैं कि उनको लगता है यार स्ट्रॉन्ग और एवरेज तो ठीक है, छोड़ देता हूं, मैं ना जो आज तक किया ही नहीं है वो करता हूं. Although that's a great strategy, but not at the last time. जब 6 weeks, 8 weeks बचे हैं, right, सिर्फ you should be picking up your strong and average topics, and first of all do that, practice that.
गेट्स दैट स्ट्रॉन्ग, एक बार रिवाइज कर लो स्ट्रॉन्ग, ताकि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं पता चल जाए, राइट? एंड देन एवरेज टॉपिक्स को यू टेक अप एंड मेक दैट स्ट्रॉन्ग. दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी. देन इफ टाइम परमिट्स, देन इफ टाइम इज देयर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वीक टॉपिक्स कर लेना, राइट? बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. ओके, कूल. Alright, I can see some of your chats, right? And many of you are saying that sir, 11th is the big problem. I'll come down to 11th later, right? But whatever I told you, you have to do for 12 topics and 11 topics both. ठीक है? So guys, one thumb rule is, right, कि आपको at least 70% of the topics cover कर लेना है ये करके, right? So strong or weak, strong and average you write down and see that weightage, is it coming out to be 70? If that itself is coming out to be 70, then amazing, great then. Okay, but if it's not, normally it won't happen, होगा नहीं, 70 पे नहीं आएगा वो. So then you will pick up on priority weak topics and add to this list so that this coverage becomes 70%. 70% is a magic number. ठीक है, राइट? अगर आप बहुत अच्छे हो तो फिर 70 का 80 करना, और भी अच्छे हो तो 80 का 90 करना, बट 70 शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट. ठीक है, समझ में आया? सो क्विकली रिवाइजिंग व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, यू विल राइट, आइडेंटिफाई एवरी चैप्टर एज स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक. ठीक है, फिर उस सबको उठाओ और स्ट्रॉन्ग और एवरेज को लो और देखो दैट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम. एंड व्हाट इज गोइंग टू कम you'll get anywhere, right? हर जगह है, हर बुक में, हर इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, right? तो you will see whether that completes 70% or not. And if it doesn't, then you will add priority में week से थोड़े बहुत topics. This should be 70% should be your magic number. वहां का कवरेज देखो, उस पे प्रायोरिटी में प्रैक्टिस करो. बचा हुआ 30% छोड़ना है, छोड़ दो, राइट? एंड आई विल टेल यू क्यों बोल रहा हूं छोड़ना. दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. ओके, आप बोलोगे सर आप पहले सर हो, वो बोल रहा है छोड़ दो, राइट? बट आई विल टेल यू व्हाई एम आई सेइंग दैट. ओके, जस्ट बी पेशेंट, आगे है. ओके, कूल, गॉट इट एवरीवन? अमेजिंग. आई एम सीइंग, ओह, सम ऑफ यू आर सेइंग, ज्योति इज सेइंग सर 80% हो जाएगा. चलो बढ़िया यार, अमेजिंग, दैट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, सो 70 इज मिनिमम, उसके ऊपर ग्रेट, अमेजिंग. ओके, चलो नाउ let me go on and go to the third secret, right? And some of it which I have said that chhod do, leave it, why am I saying that, I'll tell you later. Okay, chalo, so now moving on my dear students to secret number 3, okay, is around tests. And yaar ye jo cheez hai na, this I have seen 90, in fact 95 bhi kya, 99% of the students committing a mistake on. They don't give tests. मतलब टेस्ट तो हमें देना ही नहीं है. और बड़े मजेदार बहाने मिलते हैं, लाइक बहुत मजेदार बहाने मिलते हैं कि सर अभी तो तैयारी नहीं हुई, टेस्ट कहां से दें, माई प्रिपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, व्हाई शुड आई गिव टेस्ट, आई डोंट नो 50% ऑफ द थिंग्स, देन हाउ कैन आई गिव टेस्ट, राइट? rather than वेस्टिंग टाइम ऑन टेस्ट, आई विल प्रिपेयर. कि टेस्ट से टाइम खराब होगा, मैं टेस्ट की जगह ना प्रिपरेशन करूंगा. अरे यार माय डियर गाइस, राइट, ये मत करना. टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिकॉज जितना आता है, राइट, वो कितना आता है ये टेस्ट बताता है आपको. टेस्ट विल टेल यू एक्चुअली हाउ मच यू नो, हाउ मच इन द वाटर यू आर, राइट? आर यू लाइक इन द बॉटम ऑफ द ओशन, और यू आर इन मिडल, और यू आर लाइक जस्ट सिंपली फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द ओशन, राइट? टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ especially in the last 25 days you need to practice at least one, ideally 2 tests per day, per week, right? आपको एटलीस्ट एक हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट देने. और इनफैक्ट इफ आई हैव टू रियली आस्क मी, लास्ट 10 days में इट शुड बी टेस्ट एवरी अदर डे, राइट? अगर आइडियली एक हफ्ते में आप 3 टेस्ट दे सकते हो, दैट्स लाइक अमेजिंग, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? क्यों इंपॉर्टेंट है मैं और भी बताऊंगा आगे, बट जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग टेस्ट, राइट? स्पेशली इन द लास्ट 25 days. फर्क नहीं पड़ता हाउ मच यू नो, हाउ मच यू डोंट नो. इवन इफ यू डोंट नो 50%, इट्स ओके, बट यू हैव टू गिव टेस्ट. ओके, कूल. व्हाई दिस इज बेसिकली गोइंग टू कम फ्रॉम माय सीक्रेट नंबर 4. ठीक है,
but sorry, but important है कि this you please take a note of this, that test giving is most important. Doesn't matter you know it or not, right? Test आपको देना है, okay, last moments में अभी, right? Now why is test important? And I can see a lot of you, right, writing that sir I don't have time, I can't manage time, ठीक है, स्कूल है, बोर्ड्स हैं, फिर आप पहली सीक्रेट वाली बातें कर रहे हो, अगेन यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड. अभी बोला था ना, राइट, डिमोटिवेट नहीं होना. वॉट एवर यू आर राइटिंग एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस, राइट, सबके लिए, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, यू हैव टू गिव टेस्ट. नाउ व्हाई डू यू हैव टू गिव टेस्ट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सीक्रेट. सो सीक्रेट नंबर 4 is next. So my dear students, this is secret number 4. Analyze, test and improvise, and that is the reason why I tell you टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है. टेस्ट गिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स टेक सम फ्यू मिनट्स एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि क्या है, क्या, व्हाट इज टेस्ट एंड व्हाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो बहुत केसेस एग्जांपल्स हैं, बहुत बच्चों को देखता हूं, राइट, आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मेनी स्टूडेंट्स डू व्हाट, दे डोंट गिव टेस्ट. वही 99% उनको लगता है प्रिपरेशन करेंगे, राइट, प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम के दिन जाके टेस्ट देते. एंड व्हेन दे गिव टेस्ट, मेनी अमेजिंग केस स्टडीज कम आउट. बहुत कहानियां मिलती है मुझको बच्चों से जब मैं बात करता हूं टेस्ट देने के बाद. बहुत कहानियां मिलती है. तो एक कहानी ये होती है, सर टेस्ट तो बड़ा आसान था, मैं पूरा ही नहीं कर पाया, राइट. दूसरा, सर टेस्ट तो बड़ा आसान था बट मैं मैथ्स में अटका रह गया. किसने बोला था भाई, राइट. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सर टेस्ट तो था ठीक है बट मुझे कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी मैंने, ठीक है, तो मुझे ऑनलाइन का समझ में ही नहीं आया, मैं तो ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करी. सो देयर वाज नो टेस्टिंग ओनली व्हिच हैपेंड, राइट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू लाइक आई कैन स्पेंड एंटायर वन डे गिविंग यू ऑल द बहानास आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है. बट यार ये मतलब वो वाली बात है कि you had that knowledge but just because you didn't practice, you actually made your paper and made your rank go away, right. very unfortunate. बहुत बुरी बात होती है वो, right. तो students बात सुनो मेरी, right, you need to take test because of this. आपको एनालाइज करने की जरूरत है, इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, और बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट, most of the students I see, right, average I'm talking about, they are not able to attempt more than 60% of the paper or max लो 65. 70 तो is like is very good, right. मतलब अगर आप, and I'm not talking about तुक्के नहीं बोल रहा मैं, real attempt. So if you are giving time, right, and if you complete a full syllabus paper, if you have ever analyzed कि कितना % पेपर आप पूरा देख के attempt कर पाते हो. Now I want to ask you this guys, how many of you actually have done this? पहले तो करते ही नहीं है, जिन लोगों ने किया हुआ है या कुछ आइडिया है, कैन यू टेल मी कितना % पेपर आपने एनालाइज किया कि आप कर पाते हो पूरा अटेम्प्ट, राइट, 3 घंटे में. Does anyone of you know it? Come on, write it on your chat. I'm watching your chats, right. बताओ ये मुझको जरा, of all the students who are watching, how many of you are able to attempt, right, how much percentage of the paper. तो आ रहे नंबर 60, 40, 85, अमेजिंग. 77, देखो यार 70 से नीचे है मैक्सिमम. इनफैक्ट 90% ऑफ द कमेंट्स आर बिलो 70. इनफैक्ट 40, 30 लिखा हुआ है, राइट. नाउ सो ग्रेट, थैंक्स फॉर द ऑनेस्टी गाइस, बाय द वे. ओके, थैंक्स फॉर द ऑनेस्टी, राइट. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट एडिंग तुक्के हियर, तुक्के इसमें इज नॉट इंक्लूडेड, राइट. सीरियस अटेम्प्ट्स. ऑलराइट, कूल. Somebody is writing 100 also. Who is that? Madhura, 100%, amazing. We wish all of you are like that, right? But unfortunately, हर कोई नहीं कर सकता हो, right? So let's talk practical stuff, right? So practical चीज ये है, students, right, कि हम 70% attempt भी अगर कर पाए seriously, right, तो बहुत बड़ी बात है. 70% attempt कर पाने के पीछे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू गेट राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट से ऊपर नहीं देना, राइट. क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्किम करना,
राइट, ताकि हम टफ क्वेश्चन पे ही नहीं अटके रह जाए और काफी इजी क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, राइट, हम पहुंचते ही नहीं है वहां पे, राइट। टू नॉट गिव ऑल द टाइम टू वन सब्जेक्ट, लाइक मैथ्स में ही सारा टाइम दे दिया, राइट, या फिर फिजिक्स में ही सारा टाइम दे दिया, राइट, काफी चीजें हैं। इनफैक्ट टुडेज सेशन इज नॉट अबाउट दैट। मैं सोच रहा हूं कि एक सेपरेट सेशन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी पे ही लूंगा मैं, ओके। एंड दोज ऑफ यू who are new, we keep taking these sessions on Vedantu. Many of you who have been regular at Vedantu, तो आपको तो पता है काफी सेशंस लेते हैं। जो नए हैं, I will be taking lot of, not just me, other master teachers will be taking lot of such sessions. Strategy का मैं खुद ही लेने की सोच रहा हूँ। So do subscribe to it, right? And obviously click on the bell icon. You will be notified whenever these sessions are going to happen, and there will be lot of such sessions which we are going to do in the next 30 odd days till the time you get very successful in your JEE. We'll keep supporting you. We are there, don't worry, we are always there, okay? So those of you who are new, subscribe and click on that bell button. ये जितने भी ऐसे सेशंस होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कमिंग बैक, राइट, तो ये जो टेस्ट स्ट्रेटेजी इसमें बहुत कुछ है। तो फॉर एग्जांपल ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, टाइम कितना देना है, हाउ टू स्किम, how much time to give to physics, chemistry and maths, what sequence to follow, right, many others, many things are there. ये सब जब आप परफेक्ट करते हो तब जाके आप 70-80% तक पहुंच पाते, right? And of course preparation is also there if you don't even know anything, right? But तब भी 70% बहुत मुश्किल है, right? तब भी 70-80 तक पहुंचते हो। So guys, tell me this, बहुत लॉजिकल सी चीज है, and every one of you have preparing for these tough exams, so every one of you obviously have that kind of a logic and IQ. So think about it, हर टेस्ट में if you are not exceeding 70%, तो 30% तो आप छोड़ रहे हो ऑलरेडी पेपर में, मतलब फिजिक्स में भी 30%, मैथ्स में भी 30%, केमिस्ट्री में 30% तो आप छोड़ रहे हो। चलो 20% पकड़ लेता हूं टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट, 20% तो यू आर डेफिनेटली लीविंग। नाउ टेल मी दिस, अगर 20% छोड़ना ही है तो पहले से डिसाइड कर लो क्या छोड़ना है। I'll repeat. If you have to leave 20%, 20% तो छोड़ रहे हो, तो पहले ही डिसाइड कर लो कौन सा 20% है जो छोड़ना है, राइट। I did this during my preparation in JEE and I can't tell you it helped me so much. तो मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं आगे। Although मैं फिजिक्स का टीचर हूँ by the way, right, but I like taking examples of maths, right? So मैथ्स में as I said, permutation, combination and probability was my weak topic, right? तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि इसको तो ना हाथ नहीं लगाना, ये तो छोड़ दूंगा। दो चीजें हुई ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, आई मीन व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, बिकॉज आई न्यू आई एम लीव दिस, मैंने उसकी तैयारी ही नहीं करी। आई डिडंट प्रिपेयर, आई मीन आई एम नॉट किडिंग अप, राइट, अगेन आई एम गोइंग टू द कंट्रोवर्शियल जोन, राइट। कंट्रोवर्शियल जोन है कि यार ये कौन से सर हैं, योर पेरेंट्स विल लिसन टू दिस सेशन एंड दे विल थिंक कि भाई अगली बार से वंशी सर के सेशंस नहीं अटेंड करना, क्योंकि ये कौन से सर है तो बोल रहे मत छोड़ दो कौन बोलता है, बट गाइस लॉजिक है उसके पीछे। तो सुनो, तो मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रॉपर्टी छोड़ दी, और भी 3-4 चीजें उठाई, मैंने छोड़ दिया। आई प्लान इट इन सच अ वे दैट दिस वाज अराउंड 25%। तो 25% पोर्शन टॉपिक्स मैंने उठाए जो कि जिसका वेटेज 25% तक आता, राइट, और उन सबको मैंने क्रॉस कर दिया, छोड़ दिया, और प्रिपेयर भी नहीं किया, राइट। तो मुझे दो फायदे हुए, टू बेनिफिट्स आई गॉट, राइट। क्या है वो दो फायदे? फायदा नंबर 1, प्रिपरेशन फोकस था, बिकॉज लिमिटेड टाइम वॉज देयर, सो आई ऑब्वियसली व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट 75%, तो टाइम अच्छे से मैनेज हुआ, क्योंकि 25% करना ही नहीं था, राइट। तो जो टाइम था मैंने 75% पे दिया, ज्यादा किया, आई वेंट मोर डीप, राइट, दैट वॉज ग्रेट। तो एक तो ये था। दूसरा और ज्यादा बड़ा फायदा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। When I started attempting the maths paper and I was skim मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं करना है नहीं करना है, या उसको पार्क करके आगे बढ़ना है, राइट। ये सब एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज में मैं बताऊंगा आपको, राइट, कैसे करते हैं। सो व्हेन आई रेड द क्वेश्चन एंड द मोमेंट आई अंडरस्टूड कि ये पीएनसी का क्वेश्चन है, कैसे वो कुछ पीसी दिख जाएगा या प्रोबेबिलिटी दिख गई तो पीएनसी या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आई यूज्ड टू जस्ट ड्रू अ क्रॉस। आई डिडंट इवन वेस्ट 5 seconds ऑन इट, मतलब 5 सेकंड पढ़ा, क्रॉस किया, आगे बढ़ा, मतलब देखना ही नहीं। ये भी नहीं कि क्या पता बहुत आसान हो जाएगा, नहीं भाई, देखना ही नहीं होगा, डिसाइडेड, राइट। सो 25% ऑफ द पेपर
आई जस्ट स्किम, मतलब वो तो खत्म हो गया. तो जो भी टाइम था मैंने इफेक्टिवली दिया, ज्यादा बेटर टाइम मैनेज हुआ, राइट, एंड आई गॉट अ ग्रेट स्कोर. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया ये स्ट्रैटेजी, राइट? एंड व्हाई एम आई सेइंग वॉट एवर आई एम सेइंग? समझ में आया सबको? कम ऑन, आई एम लुकिंग एट योर चैट. टेल मी whether you understood this or not. Yes, right? Now that percentage can change, guys, right? For you, all of you. आप 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 75 हो सकता है, अब वो that you decide, right? But the strategy is same and unique, and it's very important, right? These small things create big difference. Okay? Especially जब इस बार JEE Mains Jan में हो गया है और टाइम वैसे ही कम है सबके पास, तो ये स्ट्रैटेजीज तो और ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट? आई कैन सी लॉट ऑफ यू saying and someone is saying, so Anand Prakash sir, give the list of chapters according to priority, right? I'll definitely request Anand Prakash sir. In fact, I have taken from Anand sir those slides which he gives, and probably at the end of the session I'll also show that to you, right? So hold on that. ठीक है? क्लियर हुआ ये? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? Yes, no? Tell me. Yes? Yagnesh is saying, what was my score? Yagnesh, first of all, I don't want you to be either motivated or whatever by my score. You are you. You should be focused on you. But any which ways, for everyone's information, I got a 1696 rank in my IIT JEE. That was my rank, right? But anyways, उसकी एक बहुत अलग स्टोरी है, कभी और हम डिस्कस करेंगे वो स्टोरी. But for some of you who are inquisitive, this was that. All right, चलो cool. आगे बढ़ते हैं. Secret number 5 for all of you students. Now, secret number 5 in front of your screens, my dear students, is this. ठीक है? Orient yourself for exam. ठीक है? अब आपको एक बच्चा दिख रहा है सोते हुए और एक बच्चा दिखता है पढ़ते हुए. ठीक है? तो ये मत समझना कि सर या फिर सोना या फिर पढ़ना और कुछ नहीं करना है. सर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, दैट वाज नॉट द इंटेंशन बिहाइंड दिस स्लाइड. ठीक है? वैसे इंटरेस्टिंग है, ये भी हो सकता है स्लाइड का मतलब. ऑलराइट, कूल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई मेंट बाय दिस स्लाइड एंड व्हाट आई मेंट बाय ओरिएंट योरसेल्फ फॉर एग्जाम इज द फॉलोइंग. हम क्या करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में हम रात भर पढ़ने लग जाते हैं, राइट? एंड प्रोबेबली वी स्टडी इन सच अ वे दैट केमिस्ट्री अगर अच्छी लग रही है तो हम केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, मैथ्स अच्छी लग रही है तो मैथ्स ही पढ़ने लग जाते हैं, राइट? तो ये सब चीजें हम करते हैं, राइट? एग्जाम के 1 month पहले, लाइक एटलीस्ट लाइक 30 days or 25 days बिफोर एग्जाम, राइट? It's very important for each and every one of you to start orienting yourself towards an exam. And what is the meaning of orienting yourself towards an exam is the following. If examination, example, is from 9 to 12, example ले लो कुछ भी टाइम से, then your mind should be most productive from 9 to 12. Agree? Yes or no? फिर से रिपीट करता हूं. अगर एग्जाम 9 से 12 है तो आपका जो माइंड है ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए 9 से 12 के बीच में. अब होता क्या है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फील दैट सर रात में ना शांति रहती है घर पे, रात में पढ़ता हूं. मैं भी वैसे ही था बाय द वे, ठीक है? बट जो रात में पढ़ते हैं फिर वो प्रोबेबली देर तक सोते हैं, एंड इन द मॉर्निंग टाइम्स फ्रॉम 9 to 12 दे स्टिल फील लिटिल स्लीपी एंड नॉट वेरी एनर्जेटिक और फोकस्ड. होता ये है यार कि एग्जाम तो उस टाइम पे है, राइट? तो एग्जाम में इफ यू आर वेरी स्लीपी एंड व्हाटएवर, यू विल नॉट बी मोस्ट प्रोडक्टिव. सो वन ऑफ द सिंपल पॉइंट्स इन ओरिएंटिंग योरसेल्फ इज कि लास्ट 25 दिन में आप पूरा अपना जो स्केड्यूल है इस तरीके से मेंटेन करोगे कि आप मोस्ट प्रोडक्टिव रहोगे उस टाइम पे, जिस टाइम में भी आपका एग्जाम है. फाइंड दैट स्लॉट एंड यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव. नीट वालों के जो भी है, मतलब व्हाटएवर एग्जाम्स, राइट, यू आर अपेयरिंग फॉर, यू शुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम. सो यू शुड ओरिएंट योरसेल्फ, right, for that, right? Simple. I'm looking at your chats, right? और सब लोग लिख रहे हैं सर I can't read in the morning, okay, I waste time deciding what to study. So ये सब होता है, normal है. Wasting time deciding what to study is normal again, right? You need to have a timetable and plan for that. Any which ways topic for some other session, not today. Today's session, 2 things important in orientation. Most important,
मेंटेन योर स्टडी आवर्स सच दैट यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दोस एग्जाम टाइम, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है. वन. सेकेंड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, when you are sitting and studying, right, the biggest distraction is this phone, right? ये सबसे बड़ा distraction, right? आप बोलोगे सर फोन पे तो अभी आपका सेशन देख रहे हैं, तो ऐसा मत बोलो. So guys, देखो, all being said and done, right? Use it for productivity, वहां तक सब ठीक है. Use it for distraction, that's not cool, right? So कोई PUBG खेल रहा है, कोई WhatsApp कर रहा है, कोई Instagram कर रहा है, कोई Snapchat कर रहा है, all those are distractions, right? For the next whatever few weeks remaining, you should get away from all those distractions. Honestly tell me, कितना time, right? ये PUBG and games, WhatsApp, Instagram or whatever Facebook, जो भी करके आप waste करते हो. Honestly tell, honestly, be very honest here, right? It's you and me right now on the session. Be honest, कितना टाइम वेस्ट करते हो? Put it on the chat box. कितना टाइम वेस्ट करते हो? Right? ये सब करते हो, right? 3 hours, my God, 1 hour, 24 hours. Who is this? Vipul, come on, child, give me a break. 24 hours. चलो मजाक कर रहा है विपुल, right? Most of the time, right? Most of the time, right? ठीक है. अब यार ये बताओ, बहुत लड़ाइयां होती होंगी इसमें, राइट? मम्मी पापा से दे मस्ट बी टेलिंग कि अरे पढ़ नहीं रहा, अभी भी ये कर रहा है, पढ़ ले, एंड यू आर लाइक नो 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 आई विल डू दिस, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज योर्स. इफ यू गेट अ गुड रैंक एंड गोइंग टू अ गुड कॉलेज, योर लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर. मेरा लाइफ कुछ नहीं बेटर हो जाएगा इफ यू गेट अ गुड रैंक. आपके मम्मी पापा का भी कुछ लाइफ बेटर नहीं हो जाएगा इफ यू गेट अ गुड रैंक एंड गोइंग टू गुड कॉलेज. द मैक्स दे विल फील इज प्राउड, एंड वो थोड़े से बाहर रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को बता देंगे. यही मैक्सिमम यही होने वाले, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा. तो यार स्टूडेंट्स, अगर सब कुछ आप पे है, सो ये चीजें भी आपको ही करने की जरूरत है ना, बिकॉज यूर लाइफ इज एट स्टेक, राइट? सो सिंसियर रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? इफ यू आर वेरी सीरियस right now or after the session, if you are looking at this session on mobile, then not right now, but if you are looking at your laptop, then right now uninstall this PUBGs and all other games. Uninstall, right? Just uninstall right now, okay? If you are really serious. If you are not serious, then please don't even attend this session, right? You are wasting time, right? Seriously, again going into the controversial zone, but I am the teacher and I am telling you, if you are not serious, आप ये सेशन भी अटेंड करके अपना टाइम वेस्ट कर, राइट? तो ये सेशन भी आप अटेंड मत करो, प्लीज एग्जिट कर जाओ, राइट? बट इफ यू आर सीरियस, राइट, अनइंस्टॉल करो ये फालतू चीजें, राइट? बहुत टाइम है लाइफ में. गेट इनटू अ गुड कॉलेज और वहां पर जितने गेम्स खेलना है खेलो, जो करना है करो, लाइफ विल बी सेट, बट नॉट राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. अभी क्यों बोल रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो. सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इसलिए फेल करते हैं बिकॉज व्हेन दे सिट एंड स्टडी दे डोंट हैव द कंसंट्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस दे आर नॉट एबल टू पुट मोर देन 20 or 25 minutes at a stretch. क्योंकि 20-25 minutes में you will get some notification, right? And you will again go here और करना शुरू कर देते, right? 20-25 मिनट भी at a stretch you don't sit. That's a fact, right? I'm not even asking you कि होता है नहीं होता है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूं ये होता है, राइट? किसी के लिए वो 15 मिनट्स होता है, किसी के लिए मैक्स, राइट, 45 मिनट्स होता है, राइट? नाउ टेल मी, दिस एग्जामिनेशन JEE is of how many minutes? 3 hours? 3 hours? कभी जिंदगी में 3 घंटे स्ट्रेच में बैठ के पढ़ाई ही नहीं करी अगर आपने, तो अब एग्जाम क्या दोगे यार 3 घंटे बैठ के एक साथ? माइंड विल नॉट अलाउ. Your mind will simply not allow you, right? It needs to practice. It's equivalent to saying कि ना अरे वंशी सर डिसाइड करते हैं, वंशी सर जाके ना मैराथन दौड़ेंगे. मैं इंस्पायर हो गया किसी को देख के, देखा किसी को, राइट? इस सेशन की तरह, इस सेशन को देख के आप इंस्पायर हो गए, राइट? उस तरह से मैंने ना किसी को देखा, इंस्पायर हो गया, मैं मैराथन भागूंगा यार 42 किलोमीटर्स का, बस भागूंगा, मैं तो भागूंगा, राइट? And I just get all pumped up, motivated, and I get up in the morning and I start running. आज तो मैराथन भागूंगा. यार जिंदगी में कभी 10 किलोमीटर नहीं भागा मैं एट अ स्ट्रेच, राइट? ओके, IIT बॉम्बे में एक बार 7 किलोमीटर भागा था. एनी विच वेज, जोक्स अपार्ट, जिंदगी में कभी 10 किलोमीटर आई डिडंट रन एट अ स्ट्रेच. मैं 42 किलोमीटर कैसे भाग जाऊंगा यार? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? बताओ, आप ही बताओ,
Will Vamsi sir be able to complete a marathon? Of course not. I'll be probably able to complete a marathon on a stretcher or something, right? Same applies for you ना. आपको भी ये एप्लीकेबल है ना. आप कभी 3 घंटे स्ट्रेच में पढ़ते ही नहीं हो तो एग्जाम 3 घंटे का कैसे दे दोगे? हाउ विल यू गिव? डू यू एग्री? यस और नो? या? How many of you have uninstalled? I'm serious. How many of you have uninstalled? Uninstall it, right? And after uninstalling, push the right like button. जितने likes आएंगे उतना मैं conclude करूंगा उतने लोगों ने uninstall किया कुछ ना कुछ ऐप जो तुम्हारा टाइम खा रहा है, right? The number of likes is proportional to number of guys who have और झूठ मूठ का like मत करना, right? I don't want that. Uninstall and then only like. If you don't want to uninstall, don't worry. ठीक है, don't like. In fact, I would want you to exit the session only. Right? कोई point नहीं. Right? ठीक है? करना है. First secret. Believe in yourself. Right? That's the first step. Okay? I know I'm being a little harsh. Right? But guys, please think about it. I'm doing it for you. आपके लिए बोल रहा हूँ. Right? मेरा कुछ नहीं होगा इसमें. Right? आपके लिए बोल रहा हूँ. Okay? ठीक है? So, concluding this secret, the secret is 2 things here. Orient yourself, ठीक है? टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ताकि those 3 hours are super productive. और पढ़ाई ऐसे करो so that you are free of these distractions, right? स्ट्रेच में पढ़ो 3-3 घंटे के स्ट्रेच में, right? फिर ब्रेक लो भले, then you take a break of half an hour, doesn't matter, right? But 3-3 घंटे के स्ट्रेच में, so that, right, your productivity while you are giving your JEE mains or NEET or whatever is maximized. ठीक है? Cool? Everyone? Alright? ठीक. Alright. I can see a lot of uninstalls button. Great. Amazing. चलो आगे बढ़ते हैं. My dear students, coming down to secret number 6. Simple but very efficient. Right? एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने हैं. Now, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे नहीं कर लेने, टेस्ट की तरह करने. ठीक है? यू विल टेक अ प्रीवियस ईयर पेपर, राइट? खुद के पास है, अच्छा है, नहीं है, सर्च ऑनलाइन, वेदांतु के अंदर भी यू विल गेट इट, राइट? यू सेंड मी अ मेल इफ यू डोंट गेट इट ऑन वेदांतु साइट, आई विल सेंड इट टू यू, आई शेयर दैट ईमेल आईडी एट द एंड, राइट? बट यू नीड टू टेक दैट पेपर. कितने? 5, एटलीस्ट 5 यू टेक, राइट? इफ यू कैन डू मोर ग्रेट, बट एटलीस्ट 5 यू विल टेक, right? And more importantly, you will give it as a test. अब उसमें आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ना हमने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, देखे हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से कर लो, कुछ नहीं हो जाएगा, राइट? बट यू विल गिव दिस एज टेस्ट. सो वन ऑफ दोस टेस्ट व्हिच यू विल गिव शुड बी दिस ओनली, राइट? प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको करने ही हैं, राइट? Guaranteed this will improve your marks more than anything else. In fact, return on investment of your time is maximum in this last 30 whatever 40 days जो कि बचे हैं, right? More than that, उससे ज़्यादा ही बचे हैं वैसे तो, right? But that 45 plus days which are remaining, maximum productivity will come if you give this, do this. Okay? Very important secret, right? बहुत सारे questions आ रहे हैं बाबा, ठीक है? How many hours to study and all that? You know, as I said, wait, let me just complete this, and if there is something else, I'll take it the end. Okay? Alright, moving on to the final and the last secret, which is around the inorganic chemistry, organic chemistry, which is flooded in my chat box, right? ठीक है? तो सबसे पहली चीज, ये दोनों चीजें बहुत बोरिंग है. मुझे तो बहुत बोरिंग लगती थी, राइट? इतनी बोरिंग कि यार उठाते ही नींद आ जाती है, राइट? अभी मतलब देख के फिर से नींद से आने लग रही है मुझको कि यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक. बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं ना एक अपने सीनियर की बात बताता हूँ तुमको, राइट? माय सीनियर टोल्ड मी दैट, राइट? सो आई वाज लाइक डूइंग वेरी बैड इन माय स्कोर्स एंड ऑल. तो मैं गया भैया के पास, भैया एज यूजुअल उनने आईआईटी निकाल दिया था, तो मैं भैया के पास गया, भैया बताओ क्या करूं. तो भैया ने बोला क्या करते हो तुम, क्या नहीं करते हो. आई टोल्ड हिम, देन ही सेड दैट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वाज गेटिंग 8% to 12% in inorganic organic portion of the paper of chemistry. 8% से 12% आते थे max. So he said that why are you not doing this? ये सबसे ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का. If you do this, it is a huge scope of improvement.
Then I was like, नहीं 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 बहुत boring है भैया, आप बाकी चीजें बताओ. And you know what? It was almost like a slap on my face. It didn't slap me, but it was almost like a slap on my face. He said that एक मार्क जेई में एक मार्क होता है. 1 mark in JEE is 1 mark. It doesn't matter it is come from your mechanics or coming from your coordinate geometry or coming from inorganic organic chemistry. तो उसने बोला कि तेरा एम क्या है, आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है, राइट, कि मजे करने पढ़ाई करते हुए. मैं सोचा दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है. बट ऑन अ सीरियस नोट, it's basically around getting more marks, right, in JEE, right? And for that, he told me it doesn't matter whether that 1 mark is coming from inorganic, organic, or some other topic. Now, the biggest mistake we commit, guys, is because something is boring, we just ignore it. But something that boring can be also very scoring, right? वाह, ये तो rhyme करता है. Something that boring can be scoring, right? Okay, amazing. तो ये चीज आपको नहीं छोड़नी. If this thing comes in your 70% or not, I don't care. You have to give special treatment to inorganic, organic, especially inorganic, right? और उसका तरीका ये है, उसका सीक्रेट ये है कि आपको हर दिन 1 घंटा निकाल के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़नी. इनऑर्गेनिक तो पढ़नी है और एनसीईआरटी से भी पढ़ लो तो भी चलेगा. Now the big secret in this is the following. When you start studying this, you will not get anything. मतलब पढ़ोगे आपको लगेगा सब भूल रहा हूं. जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे भूल रहा हूं. जैसे आगे बढ़ोगे ऐसा लगता है पीछे का सब भूल गया. I just forgot everything which is behind. That's what you will think. It's natural. Don't worry. Go on. आगे बढ़ो. कोई फर्क नहीं पड़ता. Right? Just go on. आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो. Another cycle करो. When you will do 3 cycles, 3 बार पूरा एक बार पढ़ लोगे, then you will think that oh, things are getting retained in my head. And that is the only way you will be able to master inorganic chemistry, so for sure, and do a bit also organic chemistry, right? Very, very important. Why very important is because it's extremely scoring, and इसको छोड़ना मतलब आप सबसे आसान चीज को छोड़ रहे. डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है. एनसीईआरटी लेवल इज ऑलमोस्ट मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक, यू नो. इनफैक्ट जेई मेंस तो छोड़ो यार, जेई एडवांस भी क्रैक हो जाता है एनसीईआरटी लेवल से, राइट? जेई मेंस तो कुछ भी नहीं है, right? For JEE Mains, you will do this, and that's the very big. You know, I know chemistry is boring. I know all that, right? But you are not here to make things interesting. You are here to get into a good college and get a good rank. Okay, remember that, and you to do this. ठीक है? Important वो है. Objective याद रखो. Objective PhD करना नहीं है आपका. Objective ये है कि अभी अच्छे marks लाके, अच्छे rank लाके, अच्छे college में जाने. That's your thing. Okay? ठीक है? Cool. Amazing. ठीक है? क्लियर होता है, राइट? क्विकली रिकैप करते हैं, राइट? सो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट, बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव करो, ठीक है? इफ यू कैन डू इट, नो वन एल्स कैन डू इट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर ठीक है, स्ट्रेंथ्स पे प्रैक्टिस करो. एवरेज और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लिखो. 70% नहीं हो रहा है तो थोड़ा और ऐड करो. इट शुड बिकम 70, राइट? एंड प्रैक्टिस दैट इन प्रायोरिटी. ओके, आफ्टर दैट you have to give lots and lots of tests, right? Especially last 25 days, ठीक है? खूब सारे टेस्ट दो. क्यों टेस्ट देना है? क्योंकि you have to analyze it, and after analysis you will get lot of things. You will get what is a pattern in which you will attempt, how much percentage are you attempting, and you need to optimize that. You will develop the stamina, okay, to sit there for 3 hours and your mind be productive, right? All of this are the benefits. Then orient yourself for the exam. Sleep patterns should be in such a way that your time is maximized during those 3 hours. आप ऐसे सो, ऐसे उठो, ऐसे काम करो ताकि वो 3 घंटे मैक्सिमाइज रहे. और स्ट्रेच में पढ़ना है, राइट? ये नहीं 10-15 मिनट पढ़ लिया उठ लिया, पढ़ लिया उठ लिया. नो, 3 घंटे के स्ट्रेच में पढ़ना की आदत डालो. वेरी इंपॉर्टेंट, आदत डालोगे आप. ओके, ठीक है? दिस इज दैट सीक्रेट 5. सीक्रेट 6, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव. प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करो, टेस्ट की तरह करो, राइट? लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर एंड यू like give it like a test. And last but not the least, 1 hour daily you will take time out for inorganic chemistry, right? Inorganic chemistry and organic chemistry, but definitely inorganic chemistry, because this is the thing which you all ignore. It's actually very scoring, right? Although boring, right? But very scoring.
and you need to give that 1 hour for it so that you get very good marks in the most scoring stuff. All right, great. ठीक है, so these are the 7 things, my dear students. Okay, 7 secrets, if I may, which will really help you, gain that extra advantage and help you to score great marks. Now tell me this, was this beneficial? Yes or no? Chalo batao. Before I go ahead and share with you some of those priority topics and all that, was it beneficial? Honestly, yes, no? Chalo, if you found yes, chalo, I would want to see in your chat and the likes. Okay, I would want to see in that, right? Those of you who found even this being little bit beneficial, I would want you to see that message on the chat and on the likes. Okay, cool. Lot of yeses. My dear students, on behalf of everyone out there, ठीक है, let's wish each other all the best. ठीक है, मैं चाहता हूं हर कोई बच्चा जो अभी वहां पर है, I think I can see more than 1200 students right now, सब लोग all the best wish करो, चलो एक दूसरे को, and from my side to every one of you, all the very best. ठीक है, cool. चलो आगे बढ़ते हैं. Quickly let me conclude. Your time is very important, right? So I'll conclude. तो देखो guys, ये है. You can take a screenshot of this. We will also send a mail of this, right? Don't worry, right? एक मेल आईडी दूंगा एंड में, वहां पर आप भेज देना, मेल भेज दूंगा, right? ये एक क्लासिफिकेशन है, हमने निकाला है इसको ऑफ लुकिंग एट पैटर्न. इजी, कितना परसेंट इजी होता है, देख रहे हो आप कितना परसेंट इजी है, राइट? सॉरी, कितना परसेंट इजी है, राइट? एंड दिस इज जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. And then this percentage is moderate and only this percent is what we think as difficult. तो ये परसेंट तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है. ठीक है, so that is why you need to attempt tests, do lot of tests. ये आपको तब समझ में आएगा. ठीक है, any which ways I'll not waste much of your time in this. All of this is available to you. We'll give it to you, right? Many of you are asking ना, आनंद सर क्या वो स्लाइड्स दीजिएगा? तो वो अलग से आप YouTube चैनल पे you can find that. If not, I have taken that in here also. तो आनंद सर has prepared all this, right? कि 6 weeks revision schedule कैसे होगा, week 1 में क्या पढ़ना है, week 2 में क्या पढ़ना है, week 3 में क्या पढ़ना है, so on and so forth. Physics में, similarly chemistry में week 1 में क्या पढ़ना है, week 2 में क्या, week 3 में क्या, right? और similarly maths में week 1 में, week 2 में, week 3 में. I'm not going to waste lot of time because I'm seeing we're already reaching that 1 hour mark. And this आप इसका रिप्ले देख सकते हो, नहीं तो आप मेल कर दीजिएगा, ये स्केड्यूल में आपको भेज देंगे, राइट? बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन सबको करते हुए वो जो 7 सीक्रेट्स मैंने बताए वो याद रखना जरूरी है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? ओके, नाउ ऑल्सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग सर क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स, वो. गाइस, ऑन वेदांतु बेसिस दिस पैटर्न जो कि वहां पर आपको दिखाया है, there are a lot of crash courses which are already running, okay, and there are small chapter classes also running, right? Many of you have visited Vedantu and know Vedantu, but for those of you who are coming to this session for the first time, जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, right, उनके लिए बता देता हूं कि vedantu.com अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीजें वहां मिलेंगी. इनफैक्ट यू कैन जस्ट टेक दिस लिंक vdnt.in/JEE 30 days. अगर आप वहां जाओगे तो आपको वहां दिखेगा कि देयर आर दिस कोर्सेस, राइट, जो कि बनाया गया है, जिसके अंदर लास्ट आई थिंक काफी बैचेस हैं. 1 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 22nd फ्रेश बैच and probably even on the end of November or starting of December. You can check that out. I am also not sure on the dates. And this will cover the whole thing, right? In intensive पूरा 11th and 12th का रिविजन, क्विक रिविजन एंड एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा. इसमें ऑलरेडी काफी बैचेस चल रही हैं और 1-2 शुरू होंगी, राइट? इसके अंदर बोर्ड का मॉड्यूल भी है, तो क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद भी वी विल गेट बोर्ड का रिविजन मॉड्यूल. There is a group in which there is a 24/7 doubt solving also, right? Experts are there, you will not get solved, and test series is obviously included in this, right? Test series जो बोल रहे थे सब इसमें, तो ये सारी चीजें हैं इसमें. It's a wonderful thing. I think you should really check it out, and if you have time, right, you should definitely enroll for it. Even if you are not able to attend, you can look at the recordings also of this, right? And especially for the students who are attending this session today,
we normally have it after our sessions. There is a lightning deal which we do, जो कि next 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली 3 आवर 55 मिनट्स तक एप्लीकेबल है. अगर आप स्पेशल प्राइस को अवेल करना चाहते हो तो यू कैन एनरोल इन दिस टाइम जोन एंड यू विल गेट दैट स्पेशल प्राइस, राइट, ऑफ 14,999, राइट. More importantly, you can also go to vedantu.com and check out these courses. So I'll show you that also. So some of you might say that, sir, crash course. Hi. I just want few topics. So my dear students, there are a lot of chapter revision courses also in this page. Okay. So all of those things are there. I'll leave it to you. You go and explore. There are a lot of things on Vedantu you will find beneficial. Right. Coming back to my session. ये email ID लिख लो. AIR1. Okay. AIR1 देखो. Email में ही, right, there is a motivation and you should aim. It's not a mazak, huh? You should aim. AIR1@vedantu.com. Mail there with your requirement and we'll be sending you those, screenshots or those PDF, right? और भी कुछ अगर आपको चाहिए आप लिख दीजिए. Let us see whatever we can provide, we'll provide and we'll help all of you students. Okay? And without wasting much time, the last and the most important thing is just do it. वो जो नीचे लिखा हुआ है ना, that is a Nike slogan. Okay? Personal inspiration for mine. Right? जब भी जिंदगी में I felt low, I felt very bogged down. Right? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. I used to follow this. It is very simple. Just do it. ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत करो. बस बैठो और करो. बस बैठो और करो. Right? That is the statement at which I would want to leave you guys with, right? My dear students, my dear lovely students, my dear students, all the very best, ठीक है? And मुझे यकीन है, पता नहीं यकीन है that with this session and this inspiration motivation, you will do and you will do great, right? Just believe it in you, right? And sky is the limit for you, ठीक है? So guys, let's wish each and every one of us all the best. I would want all the guys on the chat to wish all the others all the best. ये आपस में competition नहीं है, ठीक है? तो don't be कि नहीं मैं wish नहीं करूँगा दूसरे को, ठीक है? Come on, wish every one of you among each other. I can see students from all over the country coming this session. I hope this was productive. I hope this was useful. I hope इससे आपको कुछ फायदा हुआ है, right? मुझे बहुत मजा आया ये सेशन लेके. मुझे बहुत मजा आया आप लोगों का flurry of chats देख के. मतलब it's nothing more what should I say, satisfying for a teacher than to see a very positive class response. Thanks a lot for giving me that pleasure, right? And on that note, I'll see you soon for some of probably strategy session, guys. Okay, very soon we'll take, right? And again, subscribe and press that bell icon, more importantly, so that you'll get notification of that. ठीक है, जब वो होगा. And on that note, all the very best. ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत ही स्पेशल चीज के साथ आने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है, राइट? बहुत जल्दी मतलब, ओके, आई शुड नॉट बी टेलिंग यू दिस, बट समवेयर अराउंड नवंबर लास्ट वीक, ठीक है, कुछ होने वाला है वेदांतु पे, वेदांतु चैनल, वेदांतु वेबसाइट, दोनों पे आपको पता चल जाएगा, राइट? तो that's a secret. I can't tell you now, right? So to remain informed, please, जिसने लोगों ने वो बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमें काफी कंप्लेंट्स मिली थी बच्चों से कि सर नोटिफिकेशंस नहीं आते हमको. तो those of you are registered on Vedantu, वो उसको तो हम भेजते हैं, but those of you are just looking out on YouTube, you have to press the bell icon so that you are notified. ठीक है? My dear students, all the best, do great. ठीक है? See you soon. Tata, bye bye. All right. Bye.